So students, today we will start chapter number 16, Water, a Precious Resource. So let us start the chapter. Is a natural resource that is vital to the presence of लाइफ ऑन द अर्थ. अगर वाटर नहीं रहेगा तो अर्थ में जो है लाइफ भी नहीं रहेगा. तो वाटर एग्जिस्ट इन अबॉन्डेंट इन आवर प्लैनेट, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे अर्थ में वाटर रहता है. Let us see this pie chart that is given. So in this pie chart, total water, what is present? Sea and ocean water is 97%. Ice cap and the glaciers present is 2.06%. And the available fresh water is how much? That is 0.94%. So सबसे कम कौन सा है? That is fresh water, that is 0.94%. Fresh water is how much? That is groundwater 0.903%. Lake, swamps and rivers 0.009%, and other is 0.07% only available fresh water that is fit for the drinking. Where is the most of the water found on the earth? So most of the water जो अर्थ में मिलता है वो कहाँ रहता है? सी या ओशन में. Now what are the percentage of water on earth that is fresh, that means it is fit for drinking? वो कितना रहता है? 2.3% अर्थ में रहता है. जो भी वाटर हमको अर्थ में मिलता है वो मैक्सिमम सी और ओशन में ही मिलता है. सी एंड ओशन वाटर इज़ हाईली सॉल्टी, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग. और जो भी फ्रेश वाटर होता है वो फ्रोज़न रहता है इन द ग्लेशियर या आइस कैप में. सो दे आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल और रेडिली अवेलेबल, तुरंत अवेलेबल नहीं होता है ताकि हम उसको कंज्यूम कर सकें. Of water exists in three states, that is solid, liquid and gases. So in solid it is the ice or the glacier, liquid that is the rain water or water droplets और liquid form of water को हम liquid बोलते हैं. Gaseous में जो fog होता है, steam होता है, that is the gaseous form. So water exists in all the three states. It can change its state from 0 degree to 100 degree Celsius, and this change takes place in our environment in a form of a cycle which we know as the water cycle. Water cycle, the continuous circulation of water in nature is called water cycle. It is also called the hydrological cycle. So ये water cycle में क्या होता है? First you see there is a इवेपोरेशन. जब वाटर में पहले क्या होता है, सूर्य की किरणों से फ्रॉम द सन द वाटर गेट हीटेड. तो वाटर जब हीट होता है फ्रॉम द ओशन एंड लेक और रिवर तो इट गेट इवेपोरेटेड, तो वो वहाँ से वेपर निकलता है. सो दैट वेपर जो है फॉर्म्स अ क्लाउड अंडर द हीट ऑफ सन. देन आफ्टर दैट गेट कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, जो उसमें से वाटर वेपर बनता है वो ठंडा हो जाता है एंड कंडेंसेस इनटू मिलियन टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं फ्रॉम द क्लाउड इन द स्काई. एंड जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आ जाते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं? क्लाउड बन जाते हैं. एंड इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज़ मिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, जो है छोटे छोटे जो आपको बारिश के बूंदे हैं, with one another form a larger droplets and it's fall down as rain or snow. When they become बहुत ज़्यादा वो heavy हो जाते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं. So ट्रांसपीरेशन क्या है? जब प्लांट से ये चीज़ होता है, जब प्लांट्स वेपराइज होते हैं ड्यू टू द हीट, प्लांट गिव ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन. ओके, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. पहले वाटर जो है वो हीट हुआ, ओशन वाटर, रिवर वाटर हीट होने के बाद एज ए इवेपोरेशन वो क्लाउड बना. ठीक है, फिर क्लाउड से कंडेंसेशन हुआ, जो भी वाटर वेपर आया वो ठंडा हो गया इन कंडेंसेशन. देन इट फॉर्म्स ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म इन द स्काई. वो ड्रॉपलेट्स जो है आपस में टकराए और वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए. इट फॉर्म्स एज अ क्लाउड.
सो ये इसके बाद क्या हो गया कि रेन और स्नो जो उसमें था वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो क्लाउड अपने अंदर नहीं रख सकता। फिर उसके बाद क्या हुआ, इट फॉल डाउन एज अ रेन, तो रेन में फॉल हो गया। सो इसीलिए रेनफॉल होता है। सो ये वाटर साइकिल क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। पहले हीट होगा, हीट होके फिर ठंडा हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स आएगा, फिर वही चीज़ जो है बहुत देर तक क्लाउड अपने अंदर नहीं रख सकता है, तो इट फॉर्म्स एज अ रेन। सो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि प्लांट जो है वो भी, जब प्लांट को हीट होता है तो उसमें से भी क्या निकलता है, वाटर वेपर। ठीक है, तो थ्रू वो जो वाटर वेपर निकलता है थ्रू द प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसपीरेशन। Of water is used in mainly in agriculture sector, in the domestic and in the industrial. So इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर। इंडिया में जो है हमारा 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है फॉर देयर लिविंग। तो 90% ऑफ वाटर जो है वो इरिगेशन में यूज़ होता है एग्रीकल्चर में। इरिगेशन मीन्स द यूजिंग ऑफ द वाटर इन द एग्रीकल्चर अननेसेसरी, बिकॉज मानसून जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। कभी रेनफॉल हो भी सकता है मानसून में, कभी देर से आता है, जल्दी आता है, इसलिए जो है इरिगेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। वेयर कल्टिवेशन कंप्लीटली डिपेंड ऑन द रेन। अगर कम रेनफॉल हुआ दैट कैन रिजल्ट इन द रिड्यूस्ड यार्ड, मतलब बहुत कम खेती होगा, बहुत कम क्रॉप आएगा, या तो कोई क्रॉप होगा भी नहीं। Domestic use of water. Water required for household use is called domestic water. Why it is required? It is required for variety of purposes such as drinking, preparing the food, bathing, washing clothes and dishes, watering the plants, etc. In our homes, how we get the water? We get the water in two ways: municipal water distribution, or we extract it from the underground source through a motor driven tube well. How we get the water? Through municipal water treatment plant. First we take the water from a water source जैसे कि river या lake. Then that water is intaked in a treatment plant जो कि water को pure किया जाता है, and after that एक pump से उसको storage tank के अंदर डाला जाता है. From that storage tank it goes to the residential area, that is to your home. In rural areas, however, 80% of domestic water that comes from underground. तो rural area में जो कि शहरी एरिया है वहाँ पे underground water से ही काम होता है. In area where water is scarce, जो कम है, तो वहाँ पे, और wells, pond और river जो ड्राई हो गया है इन समर, people have to travel long distance to fetch their daily needs for water. Industrial. Now in industry how water is used? इंडस्ट्री पीपल डिपेंड ऑन वाटर, क्योंकि इतने जो इंडस्ट्री है, आपके मोरबी में भी इतने इंडस्ट्री है, वहाँ पे वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है. अगर वाटर नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा. सो इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, अ सॉल्वेंट, अ कूलेंट, अ ट्रांसपोर्ट एजेंट फॉर जनरेटिंग व्हाट, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इतना जो जल्दी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इट डिपेंड अपॉन व्हाट, इट डिपेंड अपॉन वाटर. इन दिस एरिया हैज़ increased its past several years. Sources of water, जहाँ से water आता है, तो what are the sources? The various sources of water are categorized into two ways: surface water and ground water. So what is the surface water? Surface water means water that is present on the surface of the earth, that is called as the surface water. जैसे कि आपका रेन वाटर है, रिवर एंड लेक वाटर है, सी एंड ओशन वाटर है, तो ये सभी आपका क्या है, सरफेस वाटर. सो व्हाट इज़ अ रेन वाटर? रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. व्हाई इट इज़ सो? एज वाटर फ्रॉम द सी एंड रिवर्स दे गेट इवेपोरेट एंड दे फॉर्म व्हाट, वाटर वेपर अंडर हीट ऑफ सन. सो दैट लीव बिहाइंड impurities. When precipitation occurs, the first shower, मतलब जब रेनफॉल होता है, certain gases present in the air also brings the impurity with itself. So अगर रेनफॉल होगा, consist of what? Pure water.
River and lake water. The water in these bodies, water bodies, come either from rainfall, या तो rainfall से आता है ये सब में, या तो melting of the snow or ice on the mountain. Sea and ocean water. Oceans are a huge storage of water. Ocean सबसे ज़्यादा water को store करता है. So millions of liters of water that are present in the ocean only. But water is what? Salty, and it is not fit for domestic or agricultural use. Underground water or subsoil water. Underground water is water under the ground, it is present, where the soil is completely filled or it is saturated, जिसमें soil complete रहता है, मिट्टी रहता है with water. So rain water seeps through the top soil. तो top soil chapter में मैंने आपको बताया था कि जो top soil से water जो है वो seep करता है into the layers of the rock, such as the limestone, sand, gravel, all are present, and they get collected on the top of non-porous layer. The top level of this groundwater is what it is called as the water table. The layers of porous rock that are saturated, जो rock जो saturate हो गया है with the underground water, that can be brought to the surface through natural springs or by pumping, are called what? Those are called aquifers. So the place where the water table meets the land surface, water may come out of the surface in the form of a natural spring, and they flow into the lake, stream or ocean. Natural distribution of water in India. Water available in India, it depends upon the seasonal monsoon. Rainfall जब monsoon का time होता है बारिश पे ही depend करता है. तो monsoon heavy rain over the country. तो heavy rain over the country कब होता है? During the month of June and October. और exception ये है कि तमिलनाडु में it receives over half of its rain from October to November. So India is conditioned in Thar desert and northern eastern states, that is the rainforest climate. So half of the country sees a greater extreme in rainfall. India has a network of river. The three major rivers are Indus, Ganga and Brahmaputra. These are originated from Himalayas and drain heavily 2/3 of the land area. So these rivers also account for nearly same proportion, that is, rivers are strongly influenced by monsoon, and on the other hand during the dry season water level goes down quite and a bit, most large in the river. So small tributaries on streams generally dry. It's basically an artificial wall that is built across a river and water is allowed to collect behind it. So this wall is the reservoir. Penicular area of our country. Peninsular means a piece of land that is surrounded by water on the three sides. Peninsular area है वहाँ पे proper absorption of water नहीं है. Therefore, do not have large continuous aquifers. Thanks for watching this video.